In this video lecture, I am going to discuss the details of your Sp hybridization. I have already discussed what is hybridization, what are the different type of hybridization, and how by knowing the hybridization we can calculate the bond angle, the geometries, and what are the silent features of your hybridization. So now discuss in detail the different type of hybridization. So the first type is your Sp hybridization. Now the question is, what is Sp hybridization? In this type of hybridization, one s and one p orbital, 1s and 1p orbital. 1s means it may be your 2s, it may be your 3s, it may be your 4s. And one of the p, 1p means one of the p orbital. Actually, the meaning of 1p is your one of the p orbital. Because you know the number of p orbitals are 3. They are your px, py and pz. Out of 3, one of the p orbital is used. So in this type of hybridization, 1s and 1p orbital of an atom intermix together, or you can write mix together to form two hybrid orbitals. Each of the hybrid orbitals form are of equivalent energy, and of identical shape, each of the hybrid orbital is known as Sp hybrid orbital, and the phenomenon is known as your Sp hybridization. Because we have already the idea of hybridization, that if we say Sp hybridization means your 1s and one of the p orbital will be utilized. For example, if we consider, if we discuss it in detail, for example, beryllium in beryllium chlorate, Now beryllium
atomic number is 4. It is your 1s2, 2s2. Now, in chemical bonding, or you can say during hybridization, only the electron of valence cell will be utilized. क्या होगा? केवल जो आपका वैलेंस सेल है यानी कि सेकेंड सेल, उसका ही इलेक्ट्रॉन आपका यूज होगा. सो वी कैन राइट दिस इज योर बेरिलियम which is basically 2s2. 2s2 means this is your 2s2. Now what happens if it is 2s2? So no electron is unpaired. So from this idea, the valency of beryllium should be 0. बेरिलियम की वैलेंसी 0 होनी चाहिए. क्यों 0 होनी चाहिए? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ कोवैलेंसी. आप कहेंगे सर कभी आप वैलेंसी बोलते हैं, कभी आप कोवैलेंसी बोलते हैं. द वैलेंसी इन कोवैलेंट कंपाउंड इज नोन एज कोवैलेंसी. वैलेंसी को ही कोवैलेंट कंपाउंड के केस में कोवैलेंसी कहा जाता है और आयोनिक कंपाउंड के केस में इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं. तो जैसे HCl में इफ यू कंसीडर HCl इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, देन द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. क्लोरीन की वैलेंसी 1 है. और यदि आप NaCl बोलते हो, यहां भी क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, लेकिन ये हो गई यहां इलेक्ट्रोवैलेंसी बिकॉज द कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड एंड हियर इट इज योर कोवैलेंसी बिकॉज द कंपाउंड इज ए कोवैलेंट कंपाउंड. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका, इट इज बेसिकली योर कोवैलेंट कंपाउंड, इसलिए ये नंबर ऑफ कोवैलेंसी कहलाएगा. So number of covalency equal to your simply number of unpaired electrons. जितना unpaired electron होगा वही उसकी covalency होगी. Now what is the number of unpaired electron? 0. So the covalency of beryllium should be 0. But we know that in beryllium chloride the covalency of beryllium is 2. But in beryllium chloride, the covalency of beryllium is equal to 2. आप देखिए बेरिलियम की कोवैलेंसी 2 है, तो फिर ये 2 कैसे हो गया? How? It means there should be 2 unpaired electron in beryllium. But beryllium has no such 2 unpaired electron. 1s की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 1s तो आपका वैलेंस सेल में है ही नहीं. वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है नहीं, वो तो कोर इलेक्ट्रॉन में है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2s2 है. वैलेंस सेल आपका सेकंड सेल है, सेकंड ऑर्बिट है, तो आपने 2s2 लिखा जो कंप्लीटली फिट. बट यू हैव योर 2p ऑर्बिटल which is vacant in the valence set. But beryllium has vacant 2p orbital. 2p orbital. Beryllium has vacant 2p orbital in its valence cell. इसका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल मीन्स n इज इक्वल टू 2. तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स 2s जो कंप्लीटली फिल्ड है, एंड n इज इक्वल टू 2 तो 2p जो कंप्लीटली वैकेंट है. सो इट हैज योर कंप्लीटली वैकेंट 2p orbital. So what happens in hybridization? In hybridization, electron promotion takes place from one orbital to other orbital
in same energy level. This is also a main point you can note down in hybridization. In hybridization, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन, इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम one orbital to the other, from one orbital to the other in the same energy level. Energy level means orbit, मतलब सेकंड से सेकंड में. So we cannot promote electron from 2s to 3p. We can promote electron from 2s to 2p. So this is one of the condition of your hybridization. So okay, this 2p is lying vacant. Now the question is, what happens? Actually in beryllium chloride, the covalency of beryllium is 2. इसका मतलब 2 unpaired electron हमको चाहिए. So what happens? Therefore, in excited state, one electron from filled 2s orbital, is promoted to the vacant 2p orbital. ठीक है, तो क्या होगा in excited state? Now somebody ask you what is difference between ground state and excited state. This is the ground state configuration. Ground state configuration means when beryllium is not going to form any compound, atomic beryllium. लेकिन जब ये बेरिलियम क्लोरीन से मिल करके BeCl2 बनाएगा तो नेचुरली इसमें अपना इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज इट हैज टू फॉर्म बॉन्ड. मान लीजिए अगर कोई एटम है और दूसरे एटम के साथ मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनाना चाहता है तो अपने को वो रेडी करेगा, अपने को वो तैयार करेगा दूसरे एटम से मिक्स करने के लिए. एंड इन दैट केस देयर मस्ट बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन आप इसको प्रोमोट करेंगे, दिस इज योर 2s and this is your 2p. So one of the electron from this field 2s is promoted to your 2p. So what happens? Beryllium in excited state. So beryllium in excited state, that is your simply 2s1. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया 2p में, so it becomes your simply 2s1. And 2p में we have 2px, 2py, 2pz. ये मान लीजिए आप कह रहे हैं ये 2px है, ये 2py है, 2pz है. वैसे तो आप जानते हो कि तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है. किसी को आप px ले सकते, किसी को py and किसी को भी pz. So one of the electron will shift from 2s to 2p. So you can write this is your 2s1, 2p1. So this is your excited state situation or excited state configuration of beryllium. इसका ये मतलब हुआ कि अब ये बेरिलियम अपने को रेडी कर रहा है, अभी किया नहीं है, ये अपने को तैयार कर रहा, अपने को रेडी कर रहा है to form compound to overlap with chlorine so that it can form beryllium chloride to satisfy valency 2 or covalency 2. Now what happens actually during hybridization?
Now what happens actually during hybridization, which is more important? Now this 2s orbital of beryllium, you know s orbital is spherically symmetrical, वो स्फीयर की तरह होता है। तो मान लीजिए ये आपका एक 2s ऑर्बिटल हुआ बेरिलियम का। सो दिस इज योर 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। इट विल कंबाइन विथ योर 2p ऑर्बिटल। से दिस इज योर 2p ऑर्बिटल, से इट इज योर 2px। मान लीजिए कि ये 2p में 2px है। सो दिस इज योर 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। ये भी 2s है, आपको बेरिलियम का है, देखिए यहाँ 2s है, बेरिलियम का है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना है, अब ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस 2s इज योर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस 2p इज योर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? नाउ दिस इज योर 2s ऑफ बेरिलियम, दिस इज योर 2p ऑफ बेरिलियम, which are your pure atomic orbital, each containing one electron. आप कहेंगे सर ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो अभी आया बिल्कुल आया। Now what they will do? They will mix together. They will combine together. So this is your pure atomic orbital. This is your pure atomic orbital. Now this pure atomic orbital have 2 electrons. But this pure atomic orbital have no electron. ये प्योर है, ये प्योर है। ये तो हमने ये शो कर दिया कि ये हाइब्रिड बन गए, ये तब की स्थिति है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है विद 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज प्योर 2p विथ योर 0 इलेक्ट्रॉन, विथ योर 0 इलेक्ट्रॉन। नाउ they will mix together. They will mix together. After mixing, they will form 2 sp hybrid orbital. After mixing, they will form your 2 sp hybrid orbital. Actually ये 2 hybrid orbital बनाएंगे जिसमें आप each hybrid orbital को कहोगे sp hybrid orbital. So they will form 2. Now the question is, what are the shape of this sp hybrid orbital? Their shape will be same. दोनों का जो shape होगा, both the sp hybrid orbital they have, they are of, you can say, same shape. Suppose this is the shape of your 1 sp hybrid orbital, okay, and this is the shape of your another sp hybrid orbital. They are of आइडेंटिकल शेप। अब आप कह सकते हो कि आपने जो ये शेप बनाया, मीन्स हमने जो शेप बनाया उसमें देखिए 2 लोब हैं, वन लोब इज लार्ज एंड अनदर लोब इज स्मॉल। व्हाई? बिकॉज लार्जर लोब विल शो दैट दे आर गोइंग टू कंबाइन। ये दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो आप कह सकते हो इन दिस रीजन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। So one lobe is large while another lobe is small. This is referred as sp, this is referred as sp. So now it is your, now actually they are going to mix together. They are going to mix together, and after mixing they comes to be your sp hybrid orbital. Now these 2 sp hybrid orbitals, they are of same energy. सपोज करिए इनकी एनर्जी थी 100 किलो जूल, इनकी एनर्जी थी 200 किलो जूल, तो दोनों मिलाकर के एनर्जी कितना हो गया? 300 किलो जूल। आप 50-50 बांट दीजिए तो इसकी एनर्जी हो गई कितनी? 150 किलो जूल, और इसकी भी एनर्जी हो गई 150 किलो जूल। सो दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी, सो बोथ विल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जो आप कह सकते हैं कि जो सर बिगर लोब है उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डाल। So these are 2 sp hybrid orbitals. Clear हो गया? Now these 2 sp hybrid orbitals, they must be arranged in such a way so that they should give minimum repulsion. तो कहता है ये 2 sp hybrid orbital कैसे अरेंज होंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल मिनिमम करेंगे। It means
they must arrange at your 180 degree. Now see, this is your 1sp hybrid orbital. While you can say this is your another sp hybrid orbital. So this is your 1sp hybrid orbital. This is your another sp hybrid orbitals. So this is one electron in one sp. This is another electron in another sp. तो आप कह सकते हो कि दिस इज योर 2sp hybrid orbitals, 2sp hybrid orbitals of beryllium at an angle 180 degree. अब ये BeCl2 बनाए नहीं, अब ये BeCl2 बनाए नहीं है. Now you can say that this will combine with your chlorine. This will combine with your chlorine, and again this will combine with your chlorine. Say this is 2p1, so this will combine with your chlorine. Now your hybridization is simply referred as sp. So how they will combine? Chlorine, याद करिए chlorine क्या है? Chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. अब आप क्लोरीन को देखिए कि यहां तक आपका सारा पेयर्ड है. Only there is unpairing in case of 3p. Now if we write 3p, 1, 2, 3, ये सर्कल मीन्स ऑर्बिटल है. चाहे आप स्क्वायर बॉक्स से करिए या इस तरीके से भी आप कर सकते हो. नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. So only this orbital, this p orbital will overlap. So whether it is px, whether it is py, whether it is pz, they are of your dumbbell shape. ये dumbbell shape हुआ, तो naturally you can say this is your chlorine. ये p orbital किसका है भाई? तो क्लोरीन का है. एंड सिमिलरली here also you can write, अगर इसको आप मिटा के इधर आप जगह बना लो तो कह सकते हो कि this is your another chlorine, this is your another chlorine. ये दूसरा क्लोरीन है जिसका ये p orbital है. So this has one electron, so you can arrange 1, 2. आप कहोगे सर अभी आपका ये 1 था, ये 2 कैसे हो गया? तो एक आपका था sp hybrid orbital of beryllium and another electron from chlorine. Similarly ये 1 था तो ये क्या हो गया? आपको 2 हो गया. Again the same situation कि एक था आपका किसका? sp hybrid orbital of beryllium and another electron from your chlorine. So now this bond is your spp bond. Why it is referred as spp? Because sp of beryllium and p of chlorine. Similarly, this is also referred as your spp overlap या spp bond. Why? Because sp of beryllium and p of chlorine, and both the bond, whether this bond or this bond, they are your sigma bond. ये कैसे हो गए भाई? sigma bond हो गए. That's why in simple way how we represent, we simply represent, okay, this is beryllium, this is chlorine, they are at an angle 180 degree. Now you can summarize again ये जो हमने आपको बताया. आप चाहें तो इसको शॉर्ट में फिर से समराइज कर सकते हो. How you can summarize? Say this is one sp of beryllium, this is another sp of beryllium. Say this is your one sp of beryllium. Okay, this is one sp of beryllium. This is your another sp of beryllium. So now this is, or you can say these are the two sp hybrid orbitals. They are at an angle of 180. So this is your beryllium. This is 1, this is 2. Like this. So actually this is sp and
this is sp, which are at an angle 180 degree. Now chlorine, now both have one electron, both था तो एक एक इक्वल एनर्जी है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड दिस इज योर E of chlorine. Now this is chlorine, this is P of chlorine, again this is your chlorine, this is sp, P overlap, this is another electron, this is another electron. So this is sigma bond and this is again your sigma bond, जिसको आप सिंपल में इस तरीके से लिखते हो with an bond angle 180 degree. So this is your sp hybridization. I hope there should be no doubt if you study the textbook. Thank you.